हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion। मैं हूं फख्र आलम। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY's app, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Now today we're taking you to Sydney, जहां पर एक बड़ा मुकाबला है। आज का मुकाबला आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। आज साउथ अफ्रीका बामुकाबला पाकिस्तान सिडनी से 36वां मैच है। ग्रुप 2 का ये मैच है सुपर 12 में, और इट्स पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। सिडनी वेन्यू इज अ गुड वेन्यू। इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में 2 ही सेंचुरियां हुई हैं और दोनों सेंचुरीज जो हैं वो सिडनी में ही हुई हैं। इसके बारे में बात करेंगे और पॉइंट टेबल पे जरा नजर डाल देते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के लिए मामला जो हैं वो गंभीर है, मुश्किल है। 3 मैचेस के बाद पाकिस्तान 2 पॉइंट्स पे है और जिम्बाब्वे 4 मैचेस के बाद 3 पॉइंट्स पे, बांग्लादेश 4 के बाद 4 पे, साउथ अफ्रीका 3 मैचेस के बाद 5 पॉइंट्स पे। इंडिया ऑन टॉप ऑफ द टेबल, लुकिंग रियली गुड एंड कंफर्टेबल विद 6 पॉइंट्स इन 4 गेम्स। नाउ हियर इज द सिचुएशन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान? बहुत सारे इसके ऊपर लोगों की स्पेकुलेशन है, मगर मैथमेटिकली आज पाकिस्तान आज भी अपना मैच जीते, अगला भी मैच जीते, और साउथ अफ्रीका जो है या तो वो वॉश आउट हो जाए गेम और या वो हार जाए नीदरलैंड से, और फिर ये किसी तरह नेट रन रेट पे कहानी आ जाए और हम अपने अगला मैच भी जो है वो बड़े मार्जिन से जीतें, तो सूरत हाल बन सकती है कि हम किसी तरीके से सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। बट इट्स अ टॉल आस्क। First up, of course, we've got to take down South Africa, which is a very solid team. With me in the pavilion, I've got the 4 monuments, legends of the game, served the game of cricket really well. I have the young and dynamic Shoaib Malik. Assalamu alaikum. The Mr. Reliable, Mr. Dependable, Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum. Toe-crushing, batsman terrorizing, the wonderful Waqar Younis. Assalamu alaikum ji. And the legend himself, the greatest of all times, the Sultan, Wasim Akram. Assalamu alaikum, gentlemen. Good morning, assalamu alaikum. Good morning. Wasim, big game for Pakistan today, South Africa. Yeah, goes without saying, it's the game of the lifetime. I suppose आपने पूरा सिनारियो बताया कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर सकता है, lot of ifs and buts, वो हारे, वो जीते, फिर रन रेट, बट पाकिस्तान can only do one thing from here, कि ये अपना मैच जीते, कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंस से खेलें, एंड देन बाकी तो फिर किस्मत की बात है ना कि बाकी टीमें जीतें या हारें, रन रेट आए। बट आई सपोज इनको रन रेट पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, ऑल्दो द फर्स्ट जॉब इज टू विन द गेम, एंड देन ऑफ कोर्स द रन रेट उसके साथ साथ कीप एन आई ऑन इट कि क्या जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। बट लाइक यू ऑल्सो सेड, साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स वी हैव सीन सो फार in this World Cup as far as their bowling, their batting concerned. So it'll be a good game in the end, and it'll be a test for Pakistani team's nerves as well, the way they started the World Cup. Totally, Pakistan team a little under pressure. Waqar, South Africa, one of your favorites. You call them the dark horse. You believe that they are really firing on all pistons in all departments of the game. And today, they are going to definitely put all their pressure on Pakistan because they know that Pakistan is on the weaker wicket right now. Yeah, very weak. I mean, track record तो ये कहता है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए ये मैच। उन्होंने पहले मैचेस बहुत जीते हुए, आज तक साउथ अफ्रीका से हारे नहीं हैं। सो इवन इन साउथ अफ्रीका हम जाके अभी रिसेंटली भी जीत के आए हैं ऑन दोज बाउंसी पिचेस। सो पाकिस्तान शुड नॉट हैव इशू, इट्स जस्ट द नर्व्स यू टॉकिंग अबाउट, कि अगर नर्व्स को कंट्रोल किया और ये ना सोचा कि विच सिचुएशन वी आर इन, then I think things will be okay. And of course, you got to really play well. South Africa जो पास में मैंने देखी हुई है, मैं क्यों इसको डार्क हॉर्सेस कहता हूँ कि इनमें जो रिसेंटली अभी जो इंडल्जन हुई है, रायली रसो की, मिलर्स का फॉर्म में होना, मार्क्रम का फॉर्म में होना, लेट लेके आए कि पहले वो साउथ अफ्रीका खेला हुआ है, दोबारा नहीं, बहुत पहले खेला हुआ था, देन ही डिडंट प्ले फॉर साउथ अफ्रीका फॉर गुड 6 years. सो उसका वापस आना, वो बहुत एक्सपीरियंस है, प्लेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर गोइंग अराउंड राइट नाउ. सेम गोज फॉर मार्क्रम, एंड ऑफ कोर्स इनका जो स्ट्राइक रेट्स भी हैं, द वे दे प्ले इज दे डोमिनेट द गेम. सो it's gonna be hard, but good thing is it's in Sydney. Excuse me, Sydney is a pitch where we have not seen, extra bounce. It's a good pitch. The scoring rate should be okay. I mean, 188 is the par score there. So Pakistan's got to really play well and don't worry about the next game. Win this game, of course. जीतने से आपका run rate वैसे ही थोड़ा बेहतर होगा.
and then of course see how the other teams play and then play the last game accordingly. All right. Misbah, आज के मैचअप को कैसे देखा जाए? Is it the Pakistani bowling versus the South African batting? Or is it the South African fast bowlers that are going to exploit the conditions and put Pakistani batters under pressure? देखें, दोनों चीज़ें दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आप देखें उन्होंने पिछले मैचेस में जिस किस्म की बैटिंग की है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग को बड़ा ज़रूरी है कि उनको कंट्रोल करें। और नॉर्मली पहली इनिंग का यहाँ पे टोटल भी बहुत बड़ा है, और अगर वो टॉस जीत के बैटिंग करते हैं साउथ अफ्रीका यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान नीड्स टू बेसिकली रिस्ट्रिक्ट देम। जो पाकिस्तान की बैटिंग की सूरत हाल है, 160 के राउंड अगर करेंगे तो देन वी हैव अ चांस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि हम क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस करें उनकी बैटिंग के अगेंस्ट। और एक चीज़ क्लियर है कि साउथ अफ्रीका की ये टीम आप स्कोर रोक नहीं सकते इसके अगेंस्ट। कोई भी बैट्समैन खड़ा रहा, उसने रुकना नहीं है। तो वी हैव टू बेसिकली टेक विकेट्स। थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट हमारा चाहिए हमें, नए बॉल के साथ भी, इन मिडल ओवर्स भी, स्पिनर्स भी हमारे, और एंड पे भी। तो आउट करेंगे तो हमें हमारा कहीं ना कहीं चांस बनेगा। और दूसरी तरफ थोड़ा सा पाकिस्तान को मैं कहूँगा साई ऑफ रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि सिडनी में मैच है, पिच बेहतर होगी, जिस तरह हमने पहले मैचेस में देखी, तो कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं हमारी बैटिंग उनकी फास्ट बॉलिंग को। अगर ये मेलबर्न टाइप की पिच होती है, जैसे पर्थ की पिच होती, तो डेफिनेटली देन पाकिस्तान ठीक ठाक मुश्किल में होता। भाई यहाँ पे पाकिस्तान के बैट्समैन कंडीशंस थोड़ी बेहतर हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चांसेस हैं कि वो इस मैच में अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं। शुएब, फ़खर ज़मान आए, एक मैच के लिए आए, फिर इंजर हो गए, अब फिर आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। बात हो रही है कि शायद आज उनकी जगह मोहम्मद हारिस को खिलाया जाएगा टीम के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, वुड इट बी हारिस और वुड इट बी आसिफ और खुशदिल? आई थिंक इन माई ओपिनियन खुशदिल को खेलना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर पे आपको बैटर चाहिए वो खुशदिल ज़्यादा सूटेबल है। मुझे लगता है हारिस को अगर आप खिलाएं, ऊपर वो खेले, क्योंकि उसने जो रन्स किए हुए हैं लास्ट PSL में, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई थी, तो मुझे ये लगता है कि उनको अगर खिलाना है तो ऊपर के नंबर पे खिलाएं। हाँ, अगर उनके पास ऊपर के पहले वो ओपन पे उसने जो है रन्स बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है वो यंगस्टर है और उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी अगर मिडिल ओवर्स में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप सीधा उसको ला के खिलाएंगे। तो खुशदिल इज़ द राइट चॉइस फॉर टुडेज़ गेम। खुशदिल इज़ द राइट चॉइस। माइंड यू गाइस, रिमेंबर साउथ अफ्रीका, जैसे मिसबा ने कहा और बड़ी ज़बरदस्त बात की मिसबा ने, कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग को आप रोक नहीं सकते। उनके जो 4 बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर में इस वर्ल्ड कप में, उनका स्ट्राइक रेट इज़ अबाउट more than 150, all 4 of them, and they are in good nick. रूसो ने 100 भी किया हुआ, 182 का है, स्टब्स का 178, डेविड मिलर 170 एंड माकरम 151। सो दैट्स वाई स्कोर रोकना मुश्किल हो जाता है। 2 चीज़ें बहुत जो है इंपॉर्टेंट होंगी इस गेम में। ठीक है, टॉस आपके हाथ में नहीं है, बट टॉस यहाँ पे जो भी जीता है वो इससे पहले 4 मैचेस हुए हैं और चारों जो है जिसने पहले बैटिंग की है वो जीता है। मैचअप एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो हैं वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, तो आप आज करा सकते हैं इफ्तिखार से पहला ओवर, क्योंकि जो कैप्टन है वो ही इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। तो ये बहुत अच्छा मैचअप होगा। और जो 3 नंबर पे भी आते हैं वो भी लेफ्टी हैं, रैली रोसो, तो ये एक बहुत अच्छा मैचअप हो सकता है, क्योंकि विकेट्स नहीं लेंगे। एज Misbah bhai and Wasim bhai said, it's going to be tough. Waqar? I like the idea which Malik has just floated कि खुशदिल शाह को खिलाना चाहिए। उसका एक और एडवांटेज भी ये है कि he was previous PSL में he was one of the best bowler also. Unfortunately उसको बॉलिंग नहीं कराई गई थ्रू आउट जब भी वो इंटरनेशनल खेला है। सो आई मीन आई couldn't understand why, क्योंकि बेस्ट अगर बॉलर PSL में है तो he comes as an all-rounder, so he gives you an option of another left-arm spinner in the team. And Sydney pitch अगर थोड़ा बहुत भी अगर used pitch है तो अगर उस पर spin होगा तो I think that will be an advantage also. Can I ask भाई, अगर left-hander उनकी थ्रू आउट लेफ्ट-हैंडर्स हैं और वो जिस तरह खेलते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे खुशदिल का बॉलिंग में कोई रोल हो सकता है? मिलर होगा या इवन उनका ओपनर क्विंटन डीकॉक खेल रहा होगा या फिर रैली रोसो होगा बैटिंग
कहीं ना कहीं उस टाइम पे मिडिल I ओवर्स think में he meant was that if he's in the playing 11, you can actually use him not in this particular game. In kind of अगर right arm आते हैं दो तो एक आधा ओवर वो आपको दे सकता है. ऑप्शन आपके पास आ जाती है ना, इट्स जस्ट कीपिंग एन ऑप्शन आपके पास. Yeah. वैसे तो इफ्तिखार की भी ऑप्शन है विच वी हैवंट रियली यूज्ड इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. सो आई थिंक बाबर को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा. डोंट स्टिक टू योर ओनली 5 बॉलर्स. जस्ट बी ओपन अबाउट इट कि जहाँ समझ आती है या नज़र आता है कि यहाँ मैं एक आधा ओवर ऑफ स्पिनर से करा सकता हूँ, लेफ्ट आर्मर से करा सकता हूँ. ब्रिंग हिम ऑन. डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी वसीम भाई वरीड. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में, जैसे मलिक ने भी बात की बैट्समैन की, फ़ख्र ज़मान की जगह, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैनेजमेंट को वहाँ पे देखने की है वो ये है कि किसका जो माइंड, कौन बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्योंकि वैसे तो कॉन्फिडेंस कोई जिसका भी लो frame of mind It appears Asif isn't after the video I saw on social media. That's a तो good one. ये बड़ा ज़रूरी है. पाकिस्तान अगर लो इन कॉन्फिडेंस हैं, जो भी आपके 3 बैट्समैन जो ऑलरेडी हैदर है, आसिफ है या खुशदिल शाह है, देन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप हारिस को खिलाएं. तो फ्रेश माइंड है अगर उसका किस नंबर पे देखो. नहीं, वो तो मलिक ने कहा अगर वो खेलेगा तो वो पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकता है. देन इट्स So it has to be an opener. Can't be फिर number आप three. पांच इनिंग फिर दोनों में से एक को 3 पे आना पड़ेगा. और 166 रन हैं, एवरेज उसका 33.20 This का. is, स्ट्राइक रेट PSL. This is PSL, yeah? 186.51 का लास्ट PSL में PSL हारिस का. As an opener. एज एन ओपनर. All right. क्यों टकरे मार रहे हैं? ऐसा होगा? नहीं. There you go. मैं question मैं पूछने के We'll just break come पे back जाना है. because वो आपने अभी बड़ी अच्छी आसिफ वाली बात भी की, but we've got to take a break right here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports and Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're going to Sydney today. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And in the Pavilion, I'm joined by Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. We're talking about the big game in Sydney today. It's Pakistan clashing with South Africa. Break में जाने से पहले हम बात कर रहे थे. Wasim, you had a question you wanted to ask. मेरा क्वेश्चन जो अब आएगा वो ये आएगा क्वेश्चन कि पिछले मैच में जब फखर खेला है तो उसने बैटिंग की है नंबर 3 पे. Right. तो अब शान का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा और आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? और नया बैट्समैन यू थिंक हैदर शुड कम इन, व्हाट डू यू थिंक? खुशदिल या. सो शान 3 पे आए, फिर 3 पे शान आए, 4 पे इफ्तिखार आए, 5 पे आप वैसे भी शदाब या नवाज में से किसी को भेजेंगे, 6 पे आपका खुशदिल आ जाएगा. फिर अगर शदाब ऊपर आएगा या नवाज तो वो आ जाएगा. लेट्स से ओपनिंग पार्टनरशिप इंशाल्लाह अल्लाह करे लगे 11 ओवर तक लग जाती है और अच्छा रीजनेबल स्टार्ट मिल जाता है, फिर भी 3 पे शान को जाना चाहिए? नहीं, फिर 3 पे शान को नहीं जाना चाहिए. फिर आपको नवाज या शदाब में से आप किसी को भेज सकते हैं. Very good point. इफ्तिखार इज द राइट पर्सन. Very good. आई थिंक सो. चेंज करना चाहिए. इनफॉर्म भी है इफ्तिखार. ओके. Yeah, and but Waqar, why doesn't that happen? जब हमारी बड़ी पार्टनरशिप्स लगती रही हैं माजी में तो हमने देखते हैं कि कोई ज़्यादा रद्द-बदल नहीं होता. ये पिछला मैच था जो रेफरेंस आप दे रहे हैं वसीम, इंग्लैंड का जो मैच था, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है 10 ओवरों की, तो उन्होंने डेविड मिलान को फौरन ऊपर प्रमोट कर दिया. दाविद मिलान को नीचे ले गए वो, आई थिंक, एम आई राइट? नीचे ले गए. सॉरी, उसको लेके और नीचे नीचे पावर हिटर्स को ऊपर ले आए. आए. And as soon as it brought their power hitters up, they scored 100 more runs in the last 10 overs. नहीं, और टाइम पे किया है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने नहीं किया है. लेकिन पहले ये होता था कि जब आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगती थी तो आपके पास इफ्तिखार होता था, फ़ख्र होता था. तो अगर जब फ़ख्र होता है तो आई डोंट रियली थिंक यू नीड टू ब्रिंग समवन फ्रॉम एनी अदर नंबर के ऊपर आ जाए. ये फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए, मैं समझता हूँ. और अगर बैटिंग अगर 10-12 ओवर खेल जाते हैं, जो कि हम पास में खेलते रहे हैं, और जो प्रॉबली कहीं ना कहीं ये भी क्रिटिसिज्म हुआ है कि स्लो खेलते रहे हैं, इस वजह से भी प्रेशर जो था मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा आता रहा है. तो आई लाइक द आइडिया कि अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह करे कि आप 10-12 ओवर खेल जाते हैं, देन यू कैन रियली ऑल्टर विद द बैटिंग ऑर्डर. Yeah, you can alter with the batting order. I suppose we are talking, the idea of the show में है कि हम अपने टीम की हेल्प भी कर सकें, अगर वो आइडियाज़ भी दे सकें, क्रिटिसाइज कम करें. because but coming back to the opening we've seen in this World Cup, lot of people have been talking about it. रिजवान की लास्ट 20 मैच इनिंग्स में
सिर्फ 3 मैचों में उसके स्टार्ट अच्छे हुए, पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, बाद में वो जाके उसने स्कोर किए हैं, बट अगर उसकी 20 इनिंग्स ली जाए लास्ट, आई थिंक 9 रन किए हैं उसने इंडिया के खिलाफ, एशिया कप में 17 गेंदों पे 5, हांगकॉन्ग के खिलाफ 10 गेंदों पे। I'm talking about the power plays, and I think that's where they got to work as well, both of them. Actually, let me interject there and add something more to that. वसीम भाई, it's not how start उसने दिया है या नहीं दिया है, it's the start, how what sort of start is given. That is the biggest issue कि जी आपने अगर स्ट्राइक रेट आपका रन बॉल है या उससे कम है या the odd time ज़्यादा है, तो आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और अगर हम 50 रन पहले भी पावर प्ले में करते रहे हैं, बहुत दफ़ा किया है, लेकिन फिर 50 ओवर्स के बाद जो होता है ना कि अगले 4 ओवर या 6 ओवर या 8 ओवर, फिर वो आपका यू गोट टू लुक एट लाइक यू गोट टू पुश ऑन, यू गोट टू लुक फॉर अ बिग बताई है पावर प्ले की 20 इनिंग्स में से 3 इनिंग में एक में 200 का स्ट्राइक रेट है, 32 किया इसने 16 गेंदों पे अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड देन ही गॉट एक 136 की है 26 अगेंस्ट इंग्लैंड और 19 डिलीवरीज, then 21 or 15 against Bangladesh, 140. Baki is just 100 and under 100. I'll just add to that, and I'll take this conversation to both Misbah and Shoaib Malik, that in our last 7 T20 Is, our strike rate has been 105 in power plays only, 105.55. और हमने 252 गेंदों पे सिर्फ एक छक्का लगा है हमारी तरफ से पावर प्लेस के अंदर। आई थिंक दैट्स अ वेरी अलार्मिंग स्टैट फॉर T20 क्रिकेट। मिसबा, शोएब? दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग। इसीलिए तो अगर आप प्रीवियस देखें इंग्लैंड के अगेंस्ट भी और फिर एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, यही तो वजह है कि हम रन्स नहीं कर पा रहे और हमारी जो ओवरऑल बैटिंग है वो अंडर प्रेशर है। स्टार्ट भी हमसे अच्छा नहीं हो रहा, हम विकेट्स भी लूज़ कर रहे हैं, हमारे वो स्ट्राइक रेट्स भी उतने नहीं है, एंड देन गोइंग इन टू द मिडल ऑर्डर फिर वो फिनिश भी नहीं हो रहा उस तरीके से। तो आई थिंक बेस ही नहीं बन रही, ना इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, ना इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल आपकी पार्टनरशिप होती है वो, और फिर उसको हम फिनिश भी नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल ऊपर से लेके नीचे तक हमारी बैटिंग, मुझे लगता है कि वो आखिरी जितने भी हम 10-15 मैच खेले हैं वो अंडर प्रेशर ही है, वो उस तरह की फॉर्म, वो कुछ भी नहीं आ रहा, और इसीलिए हम वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं। All right, let's talk about the South Africa. Sorry, Shoaib, would you like to add something to it? Because I think ये एक बहुत बड़ी एलिमेंट है पाकिस्तान के लिए पावर प्ले के अंदर इस किस्म की परफॉर्मेंस। देखिए, जो वसीम भाई ने स्टैट्स पढ़े रिजवान के, अगर तो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट आपका स्ट्राइक रेट इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, दैट मीन्स कि या तो कहीं जगह की आपको कंडीशन सूट नहीं कर रही, या तो आपका माइंड जो है वही अंदर से कंफ्यूज है एज अ बैटर। तो आई गेस स्ट्राइक रेट में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपका माइंड सेट एक जैसा है, तो फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका माइंड अंदर से ही कुछ सोच रहा है कि आज मैं ऐसा खेलूँ, आज मैं ऐसा खेलूँ, तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं वकार भाई के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपका स्ट्राइक रेट बेशक आप 4 बॉल खेलें, 8 खेलें, 15 खेलें, वो नहीं, फ़र्क नहीं आना चाहिए। किक स्टार्ट वो देखें, मुझे लगता है कि एशिया में बाबर और रिजवान की गेम एक दूसरे को सूट करती है, लेकिन जैसे आप बाहर की कंडीशंस में जाते हैं जहाँ पे ज़रा ज़्यादा बाउंस है, तो वो नहीं मैच हो पा रहा उन दोनों का, जिसलिए जो है हम लोग इन कंडीशन में कितने मैचेस हैं, 21 मैचेस हैं, ठीक है ना। इसमें से अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया में 3 खेले हैं, बाकी हमने अपनी कंडीशंस में ही खेले हैं, रिमेंबर दैट। सो इसीलिए उधर वाली कंडीशन में दे वर्क वेरी गुड टुगेदर, फिर भी स्ट्राइक रेट तो कम है ना। दैट मींस यू नॉट प्रिपेयरिंग कि हम ऊपर से वी आर गोना टेक देम ऑन, वो वाला एटीट्यूड नहीं है जी। मैं उसी उस पे हूँ। मैं सिर्फ रिजवान के जो स्ट्राइक रेट है उसकी फ्लक्चुएशन पे जो है, हाँ जी, पावर प्ले में सिर्फ। और बाबर जो है, जो पहले फ़ख्र काम करता था तो बाबर रिजवान वाला काम करता था, इसीलिए बाबर की एवरेज भी और हर चीज़ जो थी उसे उसका गेम प्लान पता था। तो इस वजह से वो थोड़ी सी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, बिकॉज ही ट्राइड टू टेक फ़ख्र रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिजवान के साथ वो ओपन कर रहा है, एंड बीइंग अ कैप्टन आई गेस उस पर ज़्यादा वो चीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जैसे वकार भाई कह रहे हैं, किक स्टार्ट वो तभी आ सकता है वंस यू स्टार्ट थिंकिंग टू प्ले फॉर द टीम। तो मुझे लगता है कि जो भी बंदा जाए, थोड़ा सा आपने टाइम लेना, आप ओपनर्स हैं, आपके पास होता है टाइम, लेकिन ये है कि वो जो एक पावर प्ले वाला ना, मोमेंटम सेट करने वाला, नहीं, हम लोग
आ रहे हैं अभी आपके पीछे, हम आपके जो 20 ओवर हैं उसमें हम आपको लगाएंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और इनके पास शॉट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि शॉट्स नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको थोड़े से शॉट्स और खेलने चाहिए। जब हम लोग 200 चेस कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो हमने देखा कि सेम बैटर्स वो ऊपर से उठा के खेल रहे थे, बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं थी। तो रिगार्डलेस आप पहले बैटिंग करें या सेकंड करें, वे ऑफ प्लेइंग सेम होना चाहिए कि आप 200 चेस करने जा रहे हैं। मलिक, आप यू आर ए बिग एडवोकेट ऑफ रोटेटिंग द स्ट्राइक, ठीक है ना। और इस वर्ल्ड कप में देखा है कि जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर 6 ओवर, लेकिन फर्स्ट 6 ओवर में इज़ अ बाउंड्री हिटिंग गेम। अगर आप सिर्फ रोटेशन स्ट्राइक पे जाएंगे ना तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। और मैंने ये बार बार यहाँ पे ये कहा है कि अगर आपको एक बॉल चौके या छक्के वाला मिलता है और आप उस पर मार देते हैं, एंड द सेम बॉल इज बीन बॉल्ड टू यू अगेन, डोंट लुक फॉर अ सिंगल, गो फॉर अ बिग वन अगेन, पुट द बॉलर अंडर प्रेशर। आई बीन अ बॉलर, अगर मुझे आप अंडर प्रेशर करेंगे तो तभी मैं और आपको बुरी बॉलें करूंगा या मैं ख़राब जगह पे आपको बॉल दूंगा जहाँ पे आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप मुझे बाउंड्री मार दी है, मैंने बुरा बॉल किया था, मार दी, और अगला भी बुरा बॉल था और आपने उसको नज करके सिंगल कर लिया, डॉट खेल दिया, देन आई एम ओके, देन आई एम हैप्पी विद दैट। सो मोस्ट ऑफ द बॉलर्स इन द वर्ल्ड, अभी भी आप उनसे पूछेंगे तो दे बी हैप्पी टू बॉलिंग दीज टू। इवन विकी भाई, जो आपने स्ट्राइक रोटेशन की बात की ना, वो अभी भी हो सकती है, लेकिन बाबर और रिजवान के केस में फर्स्ट 6 ओवर्स में इसलिए नहीं होती क्योंकि कैप्टन को पता होता है ऑपोजिशन के कि जो 30 यार्ड सर्कल वाले फील्डर्स हैं वो अंदर रहेंगे, एक रोकेंगे, तो इसीलिए जो फर्स्ट 6 ओवर्स में इनके लिए स्ट्राइक रोटेशन ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो जब दो तीन शॉट्स ऊपर से लगेंगे तो इनको वो फिर कैप्टन भी बोलेगा भाई 30 यार्ड सर्कल से आओ सिंगल करने दो। Wasim, let me ask you this. Is this a mindset issue कि हम अभी भी 90s की 50 ओवर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पे हम कहते हैं शुरू के 40 ओवर ठीक है, बस स्ट्राइक रोटेशन करते ने, विकेटें बचा के रखें, फिर आखिरी 8-10 ओवरों में हम एक्सेलरेट करेंगे। और उस जमाने में रजाक वजाक टाइप के लोग होते थे who used to make sure that हम एक्सेलरेट करके बड़े टारगेट हिट, आप होते थे, रजाक होते थे, हम 4, 7, 8, 9 इस तरह हमारी बैटिंग लंबी होती थी। जी जी। क्वेश्चन था अबाउट कि व्हाई आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस सब्जेक्ट पे, क्रिक इन्फो पे, आई थिंक हसन चीमा ने लिखा है। इट्स रिगार्डिंग कि जब 2000 में जब T20 शुरू हुई थी तो पाकिस्तान टीम 2007 से ऑनवर्ड जब T20 शुरू हुई थी, पाकिस्तान टीम वाज ऑन टॉप ऑफ द टेबल टेम्पलेट सेट करने में कि T20 ऐसे होनी चाहिए। बाकी टीमों ने वो कॉपी किया, फॉलो किया, हमारे वहीं के वहीं रह गए। वो आर्टिकल पढ़ने वाला ज़रूर है, हमारे हम आगे नहीं मूव हुए, बाकी टीमें मूव हो गई हैं हमसे सीख के। It's like our couple of association, couple of government things I don't want to name right now. We started off sensitive matter. We've got Shaheen Shah Afridi with us right now. Let's listen in. Shaheen, thanks for your time. First things first, how did the knee and the body rock up after that flight from Perth? Yeah, pretty good, after the injury. Now is, I think his match up like 3 games, and I think it's enough for match fitness as well, and now feeling good. Do you feel you're getting better with every game, with your rhythm? Yeah, of course. I seen last game I bowled well, and I think so for running and fielding, everything is pretty so good so far. And these are the games you play for, isn't it? SCG, 2 massive cricketing nations, and a must-win game. Yeah, I think we're still in, and we hope we play a good cricket. I think we played really good cricket last 3 games, but our 2 games is not our favor. But we hopeful we play good cricket here, and yeah. 2 of the best bowling attacks as well in the competition. When you're playing in a game like this, do you have time to admire the opposition attack as well, or do you just sit back and we're taking them on? No, I think so. The South African bowling attack is really good, all 140 plus, and personally Nokia bowl very fast, and we have some good bowling as well. So we're hopeful to good competition, and people love this game. It's not in your hands. You need other results to go your way. But first things first, just win these 2 games left, I guess. Yeah, I think so. Look, like I said, we're still in the tournament, and we hopeful we now all focus on this game, and hopeful for we win this game, and next one anything can happen. Good luck this evening. Thank you. There you had Shaheen Shah Afridi there. Interesting what he was saying. Firstly, good to see the confidence. He's saying we're still in the tournament, which is a good thing that they're thinking positively. तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारी टीम के लिए। दूसरा, उनकी इंजरी के बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो 3 मैचेस मैंने खेल लिए तो मुझे मैच प्रैक्टिस मिल गई है।
which then takes us back to the question that should have happened before the World Cup. He should have been in New Zealand. Huh? He should have been in New Zealand He getting should have this practice what he's getting in the World Cup over there in New Zealand. Yeah, Maybe he didn't finish his rehab. Okay, yeah, fair enough. he didn't. Well, anyway, वो ये कह रहे हैं कि मेरी फील्डिंग भी इम्प्रूव हुई है, बेहतर हो गई है, मुझे भागने में भी प्रॉब्लम कम हो रहा है हालांकि एंड नॉट टू बी क्रिटिकल ऑन दिस पॉइंट बट सोशल मीडिया के ऊपर वो जो 2 रन भागे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिर में, उसमें जो टर्न अराउंड था और जो इनका सेकंड रन था, उस पर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर किया हुआ है कि दैट वाज नॉट द बेस्ट रनिंग दैट दे हैड सीन एंड दैट क्लियरली शोड एंड इंडिकेटेड दैट दिस वाज नॉट ए fit runner, trying to run that second run. इस मौके पे दोस्तों हम लेते हैं एक और वक्फा right here on the Pavilion. When we come back, we'll talk more about the South Africa versus Pakistan clash, coming to you live from Sydney. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Now we're heading in to Sydney for a crucial match for Pakistan as we clash with South Africa. उसके बारे में हम बात कर रहे थे. कुछ देर पहले हम शाहीन शाह अफरीदी का आपको इंटरव्यू दिखा रहे थे. फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं वकार. पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग, द बैटरी ऑफ पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग is really great. And Wasim Jr. as an all-rounder has been a great addition. He's been one of the best strike rate bowlers in this World Cup, ahead of Sam Curran and Nokia. Yeah, he's. I mean, मैं तो बड़ा मुझे हैरत हुई थी जब उसको एक मैच बीच में नहीं खिलाया था because he is one of those bowler who controls the game in the middle overs and also bowls in the power play. So good addition. Management and the captain learned and they brought him back and he delivered. So that's a very good sign. So. Bowling wise, I don't think Pakistan have much issues. I mean, Shadab is bowling beautifully. He's he's probably on top of his game. Spinners, yes, Nawaz had a bad game, you can say it. Otherwise, he's another one who's Pakistan's bowling balance is very good. Shaheen is now played few games और वो भी अपने rhythm में वापस आ रहा है. तो it will be a match against quality bowling against quality batting. South Africa की batting बहुत quality है, बहुत dominate करने वाले batsmen. So there's every chance that if Pakistani bowlers put the ball in the right areas, I think they will have chance of breaking through and early breakthrough. और उसकी वजह से we can really jump in the game. Sydney tends to help spinners. और आपने शादाब की बात की. We've got a package here about Shadab. Let's take a look. Gets a wicket first ball. Fingers gone up. And Shadab picks up another wicket. So far, as a bowler, I'm performing, so it's good. When your team wins, that's more important thing. And against Netherlands, my performance was on a winning course, so I'm happy with that. As a bowler union, we've done well. As a batter, it's a bit different like a situation or conditions, so it's difficult to perform. His bowling's been fantastic, and we know that he can sort of deliver with the bat. But he's so crucial in terms of where Pakistan team goes because he does that job in the middle overs. Then he's also a leader in that sort of group. He's very good with information. He's a glutton for information. He gets all the information through. He'll know the matchups, know the data. He'll know the lengths to bowl on a particular ground, the dimensions. He'll work with that. So he's almost like a modern day T20 cricketer. Shadab's the kind of guy that you want in your team. Very aggressive. That aggressive nature actually is something that comes out of competitiveness, whether it's with the bat, whether it's with the ball, whether it's in the field. And I think when you put all three categories together, batting, bowling and fielding, I think he is one guy that performs on a world-class level on all three departments. Straight away I just think of all-round ability and talent. He's our best fielder by a mile. His bowling, he's hard to get away, he's tight. In any conditions as well. Now with a bit of extra bounce in Australia, he's been dangerous. And he goes out from ball one and starts scoring. He's got no fear of hitting the first ball down the ground for six that he faces. So along with his all-round talent, I think the way he approaches the game is brilliant.
now my role is a little bit like I have to put on pressure on the bowlers, so I have to play aggressive cricket. First game I didn't perform as well, but second game I was in and I didn't could finish the game. That's a regret I have so far because I have to finish that game. Now is the knockout stage for us every time when we go there, so when we go to play the game. We have to be under pressure, but that's the beauty of the cricket. When you're under pressure, you have to perform for your country. It's a new day, new condition, and new opposition, so it will be a change now. Hopefully, like if we play on our 100 caliber and they play on their caliber, I think we will win it. If we give it the best and they give it the best, we have the better side. But let's see who perform well in that day. Well, there you had Shadab. बड़ी ज़बरदस्त बात ये मिसबा कि उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि वो गेम जिम्बाब्वे के खिलाफ ख़त्म नहीं कर सके. वो रिग्रेट उनके अंदर है. He recognizes that that was a mistake, and I hope that you get to learn from these mistakes and build a better future. Yeah, obviously, जब आपको इतना बड़ा झटका लगता है, ये आप देखें तो पूरा वर्ल्ड कप आपका स्टेक पे है उस एक गलती की वजह से. वो मैच अगर पाकिस्तान जीता होता तो आज बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो होता. तो ये चीज़ें जब आपके जहन में होती हैं और आप उस चीज़ को याद रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इजी नहीं लेते किसी भी गेम को. रहना बॉल भी है तो इट्स योर जॉब, हूएवर इज सेट देयर, जो भी बैट्समैन अंदर खड़ा है ये ना सोचे कि मेरे बाद 7 ने आना है. नहीं, 7 ने आगे 0 से शुरू करना. आपका काम है कि आप ख़त्म करके जाओ और एवरी बैटर नीड्स टू जस्ट थिंक उस टाइम पे कि भाई मेरे पीछे कोई नहीं है, मैंने ये मैच अब जिताना है, जिता के जाना है. So I think that's good for Pakistan if we start doing that. Good learning. I mean, at least he's understanding and recognizing the mistake. Hopefully, rectify it in the future. Spinners की बात कर रहे थे. सिडनी में spinners को assistance मिलती है. Does that mean कि तबरेज़ शम्सी will make a comeback? Because पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ उनको साउथ अफ्रीका ने बाहर बेंच पे रखा. So would he be in the game today? आई गेस अगर ये सिडनी की बजाय किसी भी वेन्यू पे होता तो वो शम्सी को ज़रूर खिलाते क्योंकि उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट पाकिस्तान. तो वो कहीं पे भी अगर मैच हो रहा होता वो उनको ज़रूर खिलाते. और आई गेस उसको फ़ख्र बहुत अच्छा खेलते हैं और आज वो फ़ख्र है नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि जैसी कंडीशंस हैं उसमें बाबर और रिजवान जो हैं मुझे उम्मीद है कि ये कंडीशन उनको सूट करेंगी और आज हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा. ये शम्सी हैं, इनका हाथ मुश्किल से चेक होता है, स्पेशली जब ये गुगली करते हैं तो वो इट्स हार्ड टू पिक, तो इसीलिए वो इतने लीथल हैं. और दूसरा बैट बॉल्स बहुत कम देते हैं. अक्सर जो ये रिस्ट स्पिनर हो चांसेस बन जाते हैं कि आपसे बैट बॉल गिर जाता है, लेकिन ये बहुत कम देते हैं और इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपको डिसीव कर सकते हैं और शॉर्ट बॉलिंग बहुत कम करते हैं जिसकी वजह से उनका गुगली जो है वो बहुत लीथल हो जाता है. ये अभी सारी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उसमें सारी फुल तकरीबन गेंदें की आगे की है. कोई भी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ जो है got 3 wickets against Bangladesh. Yeah, he did. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसे बॉलर के अगेंस्ट या तो आप हाथ से रीड करें उसको, अगर नहीं रीड हो रहा तो देन जो आपका बेस्ट टूल है उनके अगेंस्ट वो है स्वीप शॉट्स. डिफरेंट किस्म की अगर स्वीप्स आपको मारने आते हैं तो फिर वो अंडर प्रेशर है. लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी इस बैटिंग लाइनअप पे स्वीप शॉट कोई भी रिजवान के अलावा नहीं खेलता. और अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि बॉल किस तरफ जा रही है और आप उसकी लेंथ पे नहीं पहुंच सकते, निकल के ऑब्वियसली डेंजरस है क्योंकि यू डोंट नो विच वे द बॉल इज़ गोइंग. सो क्रीज से उस लेंथ को पकड़ना वो स्वीप के अलावा कोई तरीका नहीं. तो आई थिंक पाकिस्तान अगर आप स्वीप नहीं मारते तो आप स्टंप्स के सामने नहीं खड़े हो. अगर आपको हाथ रीड नहीं होता रिस्ट स्पिनर का और आपको नहीं पता कौन सा गुगली आ रहा है कौन सा लेग स्पिन आ रहा है तो आप स्टंप्स के सामने नहीं खड़े हो. आप स्टंप्स थोड़े से शो करें और बैक फुट पे ज़्यादा खेलने की कोशिश करें. तो मुझे ये लगता है कि आप रन्स नहीं फिर आपका स्पिनर रोक सकता. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बॉल टर्न हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही ना बॉल अंदर आने की ना बाहर जाने की, तो इन कंडीशंस में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टर्न हो रहा है और आपको हाथ नहीं रीड हो रहा तो आप मैनेज नहीं कर सकते. आप कर सकते. Talking about the Brave Shamsi and the South African attack, let's listen, and we've got Parnell with us. आइए सुनते हैं. Wayne, thanks for your time. South Africa come here as the only unbeaten side left in the competition. You must be really thrilled with the cricket you're playing in the comp. Yeah, obviously it's been a really good start so far. Very important game this evening against Pakistan. It's just about trying to reset, obviously, after the
kind of highs and lows of the previous game against India, and just tackling this one. One of the reasons you're playing such good cricket is the bowling attack. You've played in a lot of teams. Where does this bowling attack rank? Probably the best. I think everyone complements each other. Even the guys who aren't playing, there's also strength in depth there, which is really good. And obviously competition for places, which elevates everyone's game. You've been very consistent in the last 6 months. What do you think you're either doing better or just doing well? I think just keeping things simple. I think also my role in the unit is very clear. I think maybe prior to that, I was probably trying to be a bowler that I'm not. So that clarity has really given me confidence. You bowl quite a bit in the power play, but you also bowl in other phases of the game. That's very important because of the selection issues. That keeps you in the side. Yeah, absolutely, and it's something that I've done throughout my career. Obviously bowling power play and death, but then also recently I've been bowling in the middle as well. So it's nice. Obviously Temba's using me in different situations, and it's just about doing what's required in a particular scenario. Sorry to remind you, but you're 33 years of age now. Still very young. Do you carry on doing what you've always done, or do you look at some of the star bowlers in this competition? Shaheen bowling tonight, Arshdeep a couple of days ago. Are you always learning, looking at the oppo? Absolutely. I think what's the saying about the old dog and new tricks? I'm still trying to learn from my own teammates, but also watching other youngsters coming up, particularly when we played in India prior to this. How Arshdeep was swinging the ball, obviously really refreshing to see that, and just trying to pick up little cues as well. Obviously there's a lot of left arm seamers around the world now currently, and it's just nice to see everyone doing well. Simple equation for your team: win and be the first side into the semis. Yeah, absolutely. I think the goal stays the same, but having said that, we start naught for naught now, and it's just about playing good cricket really. Good luck this evening, Paul. Thank you. Also looking very confident, the South African squad there. And with that, एक दफ़ा फिर आपको लेकर चलते हैं सिडनी, जहां पर आपके लिए पिच रिपोर्ट तैयार है, brought to you by Ensure. Once again at this great ground, the Sydney Cricket Ground. Well, let's get straight into the dimensions, because on this pitch, last time used Sri Lanka, New Zealand, and we're slightly closer to this side here where it's only 60 metres. If you're bowling from the Randwick end, 60 only. Downtown 84, so she's a really good hit straight. 73 very square, and if you go into that sort of cow corner, man, she's 88, 89, so it's a big hit there. The 22 yards, as I mentioned, always looks a treat here, but I just think it looks a bit browner. Dale Steyn alongside. What are you making of the 22? Yeah, Danny, it's just a good-looking wicket, and some interesting stats and facts about this ground. First teams batting first year, average total about 188. Every team that's won so far has batted first. Now, interesting fact about Pakistan, they've only scored 39 runs off 85 balls when bowlers tend to bowl that hard length kind of length. That plays into South Africa's strength, but it's not all bad news for Pakistan, because South Africa has never beaten Pakistan in a T20 international at a World Cup. I won't say good luck. All the best, chaps, on this pitch. Danny Morrison there with Dale Steyn. We need to have a word with Danny, nahi? Yes, we do. Because we definitely have to have a word with him. Pitch report मैंने नहीं कहा रिपोर्ट दी है उन्होंने पिच दिखा के कहा पहले तुसी दसो तू दस मुझे लग रहा है ये पेपर्स वहाँ पे भी चले गए है ना कुछ ऐसे ही चक्कर है स्टैट्स तो उन्होंने सारे बता दिए उन्होंने पिच के बारे में नहीं बात की They said it looked good. It looked good. Okay. Just like all of us on the show. I know. ये जरा pitch आ गई है It looks actually a good pitch. It's typical Sydney pitch. You can see the grass is there, but it's brown and it's dry. It's rolled in. And I think जो बताया गया कि इस pitch पे first inning score is 180 plus. It looks like a 180 pitch to me as well from here, sitting 7,000 miles away. Used pitch है ये पहले used हुई है. I think in one of the games. इस पे turn होगा थोड़ा? So I think batting first will be the key. अगर बैटिंग आप पहले करते हैं तो आई थिंक ये पिच थोड़ा सा सेकंड हैंड एटलीस्ट आपको पता होगा इफ यू प्लेइंग टू स्पिनर्स देन व्हेन टू यूज देम you can see like brown patches also, so there might be a little bit of spin. वैसे भी वकार भाई इवन जो पहले भी मैच हुए हैं उनमें आपने क्लियर कट एक डिफरेंस देखा है इसमें फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिली और फास्ट बॉलर्स के भी जो कटर्स हैं न्यूजीलैंड ने भी जो बॉलिंग की तो बहुत ज़्यादा स्लो वन स्पेस पहले इनिंग में टीमों ने स्कोर ही इतना ज़्यादा कर दिया था कि वो सेकेंड टाइम अगर स्पिन थोड़ा सा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू होता है बिकॉज यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर और आप अपना फोन बंद कर लें और उसके बाद लेफ्टी और राइटी का
होना मिडिल में बैटर्स का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक साइड की जो बाउंड्री है एक 60 मीटर्स है और एक मेरा 60 समथिंग, दूसरी साइड पे जो है बड़ी है बाउंड्रीज, तो अगर लेफ्टी राइटी खेलते रहेंगे तो दे कैन टारगेट जो स्मॉल बाउंड्री। स्पेशली बैड न्यूज़ थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए ये है कि ये बाउंड्री हिटिंग ग्राउंड है। इस वर्ल्ड कप में भी देखें यहाँ पे बड़े आराम से क्लियर होती है बाउंड्री, तो वो एडवांटेज साउथ अफ्रीका को जाता है यहाँ पे, तो उनके पास बिग हिटर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़ी शॉट्स और छक्के अगर वो देखें यहाँ पे उन्होंने जो मैच खेले हैं, तो वो मेरे ख्याल में एडवांटेज साउथ अफ्रीका को है क्लियर कर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्टैट है, शेयर कर लेता हूँ। पहले मैच में इसी ग्राउंड में पहली इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीका ने 205 स्कोर किया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग में 200 रन स्कोर किए। तीसरे मैच में इंडिया ने नीदरलैंड के खिलाफ 179 स्कोर किया और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में 167 किया। सो वी कैन सी दैट द फर्स्ट इनिंग टोटल हैज बीन डिक्लाइनिंग ऑन दिस पिच। व्हाट डज दैट इंडिकेट? आई थिंक इन्होंने सिर्फ 2 पिचेस हैं जिन पे मैचेस हुए हैं। आई डोंट थिंक दे हैव गॉट मोर पिचेस देन 2 पिचेस। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे प्लेइंग फ्रेश पिच पे खेलते हैं एंड देन दे प्ले the second game or the third game. इस तरह ना, I think that is the reason why the score rate is coming down, because the pitches are getting a little bit slower. थोड़ा सा वो docile होती जा रही हैं. With that, it's time for another break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports 10 Sports. It's a big day for Pakistan as they clash with South Africa in Sydney. We'll be right back after these messages. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching A Sports 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're going into Sydney today where Pakistan clash with South Africa. A must-win game for Pakistan. And South Africa would like to close this and move on to the semi-final spot. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. Now, we've seen the pitch. Yes, we have. Wasim, what says you? Win the toss, do what? Bat. And score what? Score runs ideally would be 170 I think on this pitch, because आपने बताया था, आपने बताया कि 200 फिर 200 205 200 179 विकी भी बता रहा था कि विकेट थोड़ी टाइट लग रही है, यूज्ड लग रही है। सो 170 would be a good total if you win the toss, but if you lose, अगर टॉस हार भी सकते हैं ना भाईजान जी, तो अगर टॉस हारते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो भी बैटिंग करेंगे पहली, दैट्स फॉर श्योर। देन दे नीड टू गेट विकेट्स, वी बीन टॉकिंग अबाउट इट। इनको विकेटें लेनी पड़ेंगी। अगर साउथ अफ्रीका का विकेटें हम नहीं लेंगे, स्कोर आप रोक नहीं सकते इस फॉर्मेट में उनसे। स्कोर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट देयर इज गॉट टू बी ए स्ट्रेटजी। सपोज साउथ अफ्रीका कम आउट बैटिंग फर्स्ट, मिसबा, then what are the channels that Pakistani bowlers need to bowl, or what kind of bowling in जो हमने dimensions देखी हैं अभी ग्राउंड की, फिर यहाँ पर क्या करना होगा? बॉल फुल बिकॉज बाउंड्रीज लंबी हैं बिहाइंड। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पहले भी हमने बात की है कि वो आपने स्ट्रेटजी बनानी है, मैचअप्स लेके आने, आउट करने जाना है आपने। जैसे अगर क्विंटन डीकॉक इज़ इन गुड फॉर्म और फास्ट बॉल उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहा, तो यू हैव टू जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि आपने फ़खार को बॉलिंग करानी है, और ये नहीं कि ओवर निकलवाना। इस नज़रिए के तहत आपने बॉलिंग करनी है माइंडसेट के साथ कि आउट करना है इसको, क्योंकि दूसरी तरफ से आपको पता है राइट हैंडर है, वो इतना एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है, फॉर्म में नहीं है कि वो उसको डैमेज करेगा। और दूसरी तरफ फास्ट बॉलर भी शाहीन ऑब्वियसली अगर करते हैं तो लेफ़्ट हैंडर के अगेंस्ट भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आउट होने के चांस अगर बाहर बॉल निकलता है। इसके बाद जैसे इंडिया ने किया, अर्शदीप ने रैली रोसो को आउट करने गए, आउट करेंगे, उनके जो नीचे वाले बैट्समैन हैं उनको जल्दी लेके आएंगे, तो फिर आपके पास चांसेस हैं उनको। शादाब का रोल मिडिल में आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, उसकी विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली माकरम एक ऐसे प्लेयर हैं मिडिल में कि जो दोनों स्पिन और फास्ट दोनों को लेके चलते हैं और इनिंग वो थ्रू खेलते हैं, वो पूरा लेके भी जाते हैं, बड़े ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रेटजी सिंपल है, आप आउट आपने उनके प्लेयरों को करने जाना। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं ओवर निकलवा लूँ, यहाँ पे शायद हम किसी तरीके से रन्स रोक लें, कहीं ना कहीं आपको वो डैमेज कर जाएंगे अगर वो अंदर रहे तो। ऐसे ही है वकार, हमने ये देखा है माजी में और अभी रिसेंट में एशिया कप में भी है कि एक टाइम आता है जब हम दूसरी टीम को बड़ा सही तरीके से उनको पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट इस वाले वर्ल्ड कप में भी इंडिया के खिलाफ हमने एक बड़ी सॉलिड पोजीशन में थे, हमने उनकी विकेटें गिरा दी थी शुरू में, आप टॉप जिस तरह मिसबा कह रहे हैं, बट देन समहाउ वी लूज द ग्रिप। व्हाई इज दैट हैपनिंग? एंड इट्स हैपनिंग रिपीटेडली, ये नहीं कि एक वन ऑफ हुआ है, ये बार बार हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं हम एक आधा गलत डिसीजन
उस मौके पे कर देते हैं कि जहाँ पे वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है या क्रंच टाइम होता है, वहाँ पे कोई ना कोई कप्तान से कोई ना कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है, गलत बॉलर को बॉल दे दिया जाता है या कैच ड्रॉप हो जाता है या हम पंजाबी का लफ्ज़ है बौंतर जाते हैं थोड़े से. आई थिंक वी गॉट टू रियली स्टे काम, यू नो, इन दो सिचुएशंस. अगर आज भी ऐसी सिचुएशन आती है, स्टे काम, डोंट रश टू द कैप्टन. मैंने देखा है कि कप्तान खड़ा होता है, जब नज़र आता है ना कि हम जीत सकते हैं या जीतने का ऐसा माहौल बनता है, तो हर बंदे को मशवरा आ जाता है. आई थिंक दैट्स वेयर यू नीड टू रियली स्टे काम और अपने लेट द कैप्टन डू हिज जॉब. एंड आई थिंक जब एक या दो बंदे सोच रहे होते हैं एंड उस वक्त उस टाइम पे, आई थिंक इट विल बी अ बेटर डिसीजन and they will own that decision. All right, okay. So the think tank needs to be small and ready. But we're going to take you back to Sydney where both the captains are walking out for the toss, brought to you by Dettol Soap. Now for the all-important coin toss out in the middle here, ICC match referee Andy Pocock, good to see you, sir, and the two skippers, Mrs. Bavuma and Bubba, and I believe, Bubba, you've got the coin. Oh, hang on. Give it another go. Technique. Heads. It's a tail. Tails never fails. What are you going to do, Bubba? We will bat first and we will try to run on the board and put pressure on them, and pitch look like very decent, and I think maybe later on second inning might be help the spinners. Hasn't gone to plan, obviously. How do you address things tonight? Of course, we give us 100% in this match and trying to win this match, and we will, boys are confident and looking forward to the match. Have you changed any personnel for tonight? Yeah, we have one change. Unfortunately, Fakhr is out. Haris is in the playing 11. Good luck. Thank you, Bubba. Tim, but they're going to bat first. Would you have? Yeah, I would have batted first as well. I just think the nature of the surface may be a little bit worn. Yeah, it does look a bit dry. I know there's a little bit of shade of green, but it looks like just grass green that's been rolled in. So yeah, we would have wanted to bat. Runs on the board is always an advantage. But in saying that, we have to bowl. We'll have to do that quite well. We've been doing it quite well, obviously, in the games. I'm leading up now. So restrict them to a good total and try chase it down. Things are going well for you guys, clearly, but for both, it's interesting. Some of your captains have been under the pump a little bit. How are you coping with things? Yeah, look, I mean, the form is not there. Look, I'm fortunate that I've got a great bunch of guys at the moment. So in terms of support, in terms of confidence, there's nothing short that I'm getting from those guys. The team is doing well as well, so that kind of helps as well. But I mean, I'm still positive. I still believe good things are around the corner. And have you made any changes to your side? Yeah, we've got two changes. One forced change in David Miller. He's out with an injury. It's precautionary, I would say. Clausen comes in for him. And then Tabrei Shamsi comes in place of Keshav Maharaj. Oh, nice one, Temis. Good luck. Have a goodie. Cheers. All right, news from the centre is that Bubba, they've won the toss, going to go up front and bat first. जी दोस्तों, सिडनी से खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर. पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और बाबर आजम ने पहले एज पर डैनी मॉरिसन बल्लेबाजी करने का पहले फैसला किया है. सबसे पहले तो डैनी मॉरिसन की जैकेट तो छोटी कराओ. लग रहा है रेनकोट पाके आया है. घुटनों तक है उसकी जैकेट. I think he hasn't got the mail about fashion. Either that. बल्लेबाजी यूं होती है. तलवारें चल रही हैं. Also, great toss to win. Very big toss to win, and also that one very important change. Waqar Younis, मोहम्मद हारिस इज इन. बिल्कुल अच्छी बात है. यंगस्टर को आपने चांस दिया है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको किस नंबर पे खिलाएंगे. दैट्स व्हाट मैटर्स. क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे व्हेन चिप्स आर डाउन देन यू ब्रिंगिंग अ यंगस्टर, तो उसको मतलब ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए कि वो अपना गेम खेल सके बजाय, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन पे वो अपना गेम ज़्यादा बेहतरी से खेल सकता है, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है. उसे एटलीस्ट एक नंबर पे खेलने का आइडिया है और वो है टॉप ऑफ द ऑर्डर. राइट. शुरू में आप लोग सारे कह रहे थे कि इट वुड बी बेटर कि कुछ दिल को जो है वो मौका दिया जाए. इन्होंने अभी तक ये दोनों कह रहे थे. आपने बड़ी जल्दी उनकी तरफ हम अभी भी कह रहे हैं कि खुश दिल को मौका देना चाहिए था, क्योंकि जिस नंबर पे आपको बैट्समैन चाहिए, अगर आप उसको नीचे खिला रहे हैं 5 पे 6 पे,
फिर सही नहीं है। फिर ये खुश पाकिस्तान थे। की प्लेइंग 11 आ गई है दोस्तों, एक चेंज के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आने वकार। Yep, तीनों को आपको पता है, little bit of struggle for them. Shan is in good form. I hope that Rizwan Babar starts scoring runs. If Fakhr is in good form, so basically अगर जिस तरीके से numbers लिखे हैं तो Haris will bat at 4, and then your 4 genuine good pacers. So I mean balance है, and as Malik said that अगर वो youngster को खिलाया तो I think opportunity किस number पे दी जाती है या उसकी game किस नंबर को सूट करती है, that is going to be crucial. Misbah, South Africa. Bahuma, Dikor, Grosso, as usual, in the top order. Very strong batting. Akram, Klassen, ये एक चेंज किया उन्होंने, पिछले मैच नहीं खेले. स्टब्स, पार्नर, रबादा, नोकिया, नगीदी, शमसी, मिलर नहीं, so मिलर या और एक और भी अगर आप देखें कि इनकी टीम में आज उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खिलाया, उसकी जगह उन्होंने नगीदी को रखा और शमसी को लेके आए हैं उसकी जगह, लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह. Miller probably is injured. Must be. Got to be. He is a main player. And that's a big miss for them. I mean, especially good news for Pakistan. Now I think कि वो जो नवाज का रोल है in bowling वो बड़ा important हो जाएगा पाकिस्तान के लिए. Still a very good side though. वो अभी हमें नहीं पता उनको रेस्ट कराने मिलर को, जो अभी खबर आ रही है मेरे पास, कोई एग्जैक्टली हल्की सी इंजरी थी तो उस वजह से उन्होंने मिलर को जो है रिस्क नहीं ले रहे हो, आज रेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि आगे भी खेलना है. अगर सेमीफाइनल का वो सोच रहे हैं, द थिंकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग मैचेस. बट नाउ दैट टेक्स अस द रिस्पांसिबिलिटी हैज कम ऑन टू द पाकिस्तानी बैटिंग टू सेट अप ए big total so that the bowlers can defend, and with that decent total, ideally big कह सकते हैं, but decent total. A decent total, defendable total, that we can defend. With that, we're going to take another break right here on the Pavilion. When we come back, it's going to be time for the expert predictions. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप. हेडिंग इनटू सिडनी, जहां से खबर यह आई है पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. मिलर जो हैं वो हल्की सी इंजरी थी, प्रिकॉशनरी तौर पे उनको बाहर बिठाया गया है. कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वकार साउथ अफ्रीका के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्या ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? आई थिंक दो चीज़ें जो अभी तक शुरू हुई हैं वो दोनों पाकिस्तान की फेवर में हुई. एक तो टॉस का जीतना, पहले बैटिंग, पिच थोड़ी सी ट्रैक रिकॉर्ड और स्टैट्स भी ये बताते हैं कि सेकंड टाइम बैटिंग मुश्किल हो जाती है. और दूसरा ऑफ कोर्स मिलर का ना खेलना, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को एज जाएगा, बिकॉज मैन इन फॉर्म एंड ऑफ कोर्स वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, तो वो इशू है. तो आई थिंक पाकिस्तान शुड फील कंफर्टेबल. इट्स ऑल अबाउट जस्ट नाउ कि आज जाके अच्छे से बैटिंग करो, पुट सम रन्स ऑन द बोर्ड, 160 करो. I don't think the South Africa will be able to chase Miller that. की बात कर रहे थे कि man in form but not in there, but there's another man who's been in very destructive form, and that's Riley Russo. We've got a little feature on him. Let's take a look. That's beautifully again. So it's 2 in the over for Riley Russo. Brutal power. What a wonderful display you're seeing here from Riley Russo. This has been an outstanding innings. This is such an emotional moment. Just a normal day. We were a little bit skeptical about the rain. Came to the ground, just doing my normal stuff, and then had 2 new bats. So I was looking forward to using them straight into the match. And eventually, when we got things going, Quinton was being himself, serious as always. And I just tried to liven the mood a bit. I got away with what I thought I might have nicked the ball and didn't pop up on Snicko. Got away with one there, I felt, and I just thought maybe today could be my day. Hit the first ball, pull shot for 4, the rest is history. I don't know anything about the records or the sixes or the stats behind it. I'm just happy that I performed really well on the day, and especially that we got the win. I think, like I said, after I hit that first ball for 4 and the next over I hit one straight over the bowler's head for 6, that really got me in the groove and really got my momentum up, and I just thought like today is going to be a good day, and they don't want to chuck it away in the 40s or in the 60s. Mr. De Kock helped me out there. He kept on hampering me, said, listen Riley, today you got to make it big, and I did, and I'm very satisfied and very ecstatic of my performance on the day.
I try and enjoy the moment. I try and see what fans are, what they're shouting, how they're looking like, what they're wearing, just to get outside of that zone. But the moment the bowler runs up, I'm 100% focused on that specific ball. But when that's done and dusted, then I look around again, make a joke with the cock or, whoever I'm batting with. I'm just trying to live in the moment and enjoy myself. And that's when I play my best cricket, is when I'm just free and I can just strike the balls and hit it where I want to hit it. I've enjoyed this ride thoroughly. Just very proud to be playing for South Africa, as anyone should be, to represent your country. It's just another game for us. We need to win, we want to win. We don't go into a game wanting to lose. So, I mean, that's pressure in itself, especially against Pakistan. There's nothing guaranteed, we're not qualified yet, so we need to win. Hopefully, things go well. If we play one game at a time and we do our thing, hopefully, we're holding thumbs that we bring the cup back home. You have to remember these occasions because it happens so fast, and before you know, the day's finished. So I try and really remember. I still remember the last ODI that I ever played for South Africa. I made sure I remember that so well. So it's just these little things in these World Cup situations, and all the Bangladesh fans here that the other day, the Tigers on their hats. So like, it's just crazy things like that you enjoy as a cricketer, and there's memories that you'll like cherish forever. Hopefully we win the cup. Riley Russo, emotional and very determined. And with that, it's time for the expert predictions, brought to you by Olivia. Right, Janab, expert predictions का time है. शोएब मलिक आपसे शुरू करते हैं. पाकिस्तान without a delay. वकार, दिल कह रहा है पाकिस्तान, दिमाग कह रहा है साउथ अफ्रीका. तो क्या लिखना, मैंने क्या है यहाँ दो पे में लिख लो, स्लैश कर सुननी है उधर से. कह रहे हैं कि एडवांटेज पाकिस्तान के पास है. पहले बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान, बाद में पिच स्लो हो जाएगी. फिर दिमाग ये भी कह रहा है कि साउथ अफ्रीका जीतेगी. किसी एक पास ही रहो सर. हाँ सर, वो कह रहे हैं कि अटैक सेम है. उसी सारे गल्ला कर लो, फिर मैं बाज दस नहीं ऐसी वो ले आ रहे हैं कि थोड़ा दिल की कह रहे हैं, दिमाग की कह रहे हैं. पहले वो छठो है, दोस्तों फेफड़े की कह रहे हैं. साउथ अफ्रीका. ऑल राइट, साउथ अफ्रीका. फेफड़े जो होनी उन्होंने कर लिया सारा. मिस Pakistan. Pakistan. I think with all my stats and all my Zaicha वगैरह निकाला है मैंने रात को, तो I feel like it's going to be a Pakistan day inshallah. It is going to be a Pakistan day. मुझे लग रहा है शाम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ. You said South Africa. In any case, अगर पाकिस्तान हार भी गया, अल्लाह ना करे, तो फिर भी मारिए. अगर जीत भी गया तो फिर मारोगे ना. And that goes for your expert prediction. Right, gentlemen, any parting words that you'd like to say, Wasim? Yeah, see you at 5 o'clock. Yeah, definitely. Sounds good. Misbah? Let's hope for the best. Let's hope for the best. ऑन एयर ऑर्डर दे देना, जल्दी आता है. क्या चीज़? ये मैंने देखा, खाने का ऑर्डर हुआ था कल का. आपको तो पता ही नहीं है, मैंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है. वकार. अच्छा. Pakistan play really well, and we're all praying for you. Yeah, we are all praying, not just us here in the pavilion, but Pakistani fans around the world are hoping and keeping their fingers crossed. But remember, South Africa, they're eyeing that cup. They've been eyeing it for a very long time. They've been given all kinds of titles, but let's see which team will prevail at the end of the day. You're watching the Pavilion. This is A Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We'll see you on the other side of the game.